Question number 21. The artist who is particularly known for his representation of mythological characters of Indian epic is. इस क्वेश्चन का मीनिंग है वह आर्टिस्ट जो सुपरिचित है भारतीय महाकाव्यों के पात्रों पर आधारित चित्रण करने के लिए. ए. नंदलाल बोस, बी. विनोद बिहारी मुखर्जी, सी. राजा रवि वर्मा, डी. अभिनंद्रनाथ टैगोर. And the correct answer is C. राजा रवि वर्मा. राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकार थे. उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया. उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र है. हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उन्होंने अपने चित्रों में किया. वडोदरा गुजरात स्थित लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following is not associated with fine arts? निम्न में से क्या ललित कला से संबंधित नहीं है? A. पेंटिंग, B. स्कल्पचर, C. प्रिंट मेकिंग, D. क्राफ्ट. And the right answer is D. Craft. Question number 23. Dandi March is a renowned sculpture of. Dandi March यह विख्यात शिल्प किसने बनाया? ऑप्शंस है A. D.B. रॉय चौधरी, B. राम किंकर बैज, C. रोडिन, D. सुबोध गुप्ता. And the correct answer is A. D.B. रॉय चौधरी. यही क्वेश्चन लास्ट ईयर के AMU के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था. जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आंसर शीट बाद में जारी की गई उसमें राम किंकर बैज बताया गया है. जो यूनिवर्सिटी ने बताया वो आंसर गलत है. ऑप्शन ए जो D.B. रॉय चौधरी है उसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक है. देवी प्रसाद रॉय चौधरी वॉज एन इंडियन स्कल्पचर, पेंटर एंड फाउंडर चेयरमैन ऑफ द ललित कला अकेडमी. इन्हें सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. He is known for large size outdoor sculptures such as Triumph of Labour and the statue of Mahatma Gandhi, both at Marina Beach, Chennai. Martyrs Memorial in Patna, Dandi March statue in Delhi. Question number 24. How something feels to the sense of touch is associated with. निम्न में से स्पर्श संवेदना से क्या संबंधित है? A. लाइन, B. कलर, C. फॉर्म, D. टेक्सचर. और इसका सही आंसर है D. टेक्सचर. टेक्सचर ही है जो हम टच करके जान सकते हैं. आंखों से देख के हम लाइन, कलर और फॉर्म बता सकते हैं, पर टेक्सचर जो है वो हम स्पर्श करके बता सकते हैं या फील कर सकते हैं. Question number 25. The place where Buddha attained enlightenment is. गौतम बुद्ध को किस स्थान पर बुद्धत्व की प्राप्ति हुई? A. सारनाथ, B. बोध गया, C. कुशीनार, D. सांची. और इसका सही जवाब है B. बोध गया. Question number 26. The novel Da Vinci Code is written by. Da Vinci Code यह उपन्यास किसने लिखा? A. एरिक गिल, B. डेविड ओगिलवी, C. Dan Brown, D. Anthony. And the correct answer is C. Dan Brown. Question number 27. Writings or drawings made on a wall or any other surfaces usually without permission and within public view is called. दीवार या तत्सम अन्य पृष्ठभागों पर बिना अनुमति से, बिना इजाजत लोगों को दिखे ऐसा किया गया लेखन या चित्रकारिता. ऑप्शन है A. म्यूरल, B. फ्रेस्को, C. डूडलिंग, D. ग्राफिटी. और इसका सही जवाब है D. ग्राफिटी. Question number 28. The utilization of assorted printing paper which is then altered and rearranged by cutting, shaping and then gluing to construct something. जिसका हिंदी में मीनिंग होगा चयनित मुद्रण कागजों को काटकर, आकार देकर या चिपकाकर पुनर्व्यवस्थित करके पुनर्निर्माण के लिए उनका किया गया उपयोग. ऑप्शंस है A. एचिंग, B. रिलीफ, C. कोलाज, D. पेंटिंग. And the correct answer is C. collage. Question number 29. Are that primarily utilitarian and decorative rather than purely aesthetic is. ऐसी कला जो मूलतः सजावट और उपयोगिता के लिए की जाती है. Options are A. abstract art, B. classical art, C. secular art,
D. Folk art. And the correct answer is D. Folk art. Question number 30. Lithography is the process of lithography किसकी कार्यविधि है? A. Surface art. B. Printmaking. C. Painting. D. Kinetic art. And the correct answer is B. Printmaking. Lithography was invented in 1796 by German author and actor Alois Senefelder as a cheap method of publishing theatrical work. Lithography can be used to print text or artwork onto paper or other suitable material. Question number 31. The film The Theory of Everything is based on the life of The Theory of Everything. यह चलचित्र किसके जीवन पर आधारित है? A. Napoleon. B. Alexander the Great. C. Stephen Hawking. D. Albert Einstein. And the correct answer is C. Stephen Hawking. Question number 32. E.B. Havell is associated with. E.B. Havell संबंधित है A. Company School. B. Bengal School. C. Madras School. D. Baroda School. And the correct answer is B. Bengal School. He was the principal of the Government School of Art, Calcutta from 1896 to 1905, where along with Abhinandranath Tagore, he developed a style of art and art education based on Indian rather than Western models, which led to the foundation of the Bengal School of Art. Question number 33. Gouache technique is A. Transparent. B. Opaque. C. Done with clay. D. With oil color. And the correct answer is B. Opaque. Gouache painting technique is which a gum or an opaque white pigment is based to watercolor to produce opacity. In watercolor, the tiny particles of pigment become enmeshed in the fiber of the paper. In gouache, color lies on the surface of the paper, forming a continuous layer or coating. Question number 34. Bundi is located in the region of A. Hadoti. B. Chamba. C. Dilwara. D. Jaipur. So correct answer is A. Hadoti. Bundi is a town in the Hadoti region of Rajasthan state in northwest India. Question number 35. Ajanta caves are famous for A. Temples. B. Terracotta. C. Wall paintings. D. None of the above. So correct answer is C. Wall paintings. Question number 36. Rabindranath Tagore's painting reveal a strong sense of A. Realism. B. Narrowness. C. Rhythm. D. Communalism. And the correct answer is C. Rhythm. Question number 37. Poster design is related to the field of A. Pictorial art. B. Graphic art. C. Commercial art. D. Architectural art. Correct answer is C. Commercial art. Question number 38. The copper dog from Harappa civilization is in A. Lothal. B. Raigad. C. Sindh. D. Sumer. And the correct answer is A. Lothal. Question number 39. The crossed bison was created in A. Bhimbetika cave. B. Altamira cave. C. Lascaux cave. D. Bagh cave. So the correct answer is C. Lascaux cave. Question number 40. A Tale of Three Cities, Meenakshi, is the notable film of A. Anupam Sood. B. M.F. Hussain. C. Ramchandran. D. Gogi Saroj Pal. And the correct answer is B. M.F. Hussain. Meenakshi, A Tale of Three Cities, is a 2004 Hindi film directed by M.F. Hussain and starring Tabu, Kunal Kapoor and Raghuveer Yadav.